So hi everyone. Today we are going to have the last session about the TP Act, and in today's class we are going to cover the portion of the lease. And in the last class we have discussed till section 111 of the Transfer of the Property Act. Okay. So under the concept of the determination of the lease, we have discussed that the lease of the immovable property that might be ended in different possible ways. Okay, just like by the with the passing of the time, and when the terms and conditions of the lease is met, or when the lessor's interest ends, or when the lessee or the lessor's interest merge. So these are the circumstances under which we have discussed. There are around 8 circumstances in which we have discussed that the lease can be terminated. Okay. So according to the next section, we have discussed under section 112 about the waiver of the forfeiture of the property. Okay. And under that we have discussed that the forfeiture under section 111 clause G can be cancelled if the lessor accepts the rent that became due after the forfeiture, or secondly, if the lessor takes any action showing an intention to continue the lease. Forfeiture of the lease means the closure of the lease. For example, I am having a lease of the property. So when the forfeiture of the lease will happen, that means I will not be able to get the lease anymore. Okay, if I am the lessor and another person is the lessee, sorry, if I am the lessee and my owner is the lessor, then I will lose my all the rights to gain on the lease. Okay, so under section 112, we have understood that a forfeiture under section 111 clause G can be cancelled if the first point is the lessor accepts the rent that became due after the forfeiture. The first point, what is it? The first point is if the lessor, the person who gives the lease, that person is called the lessor. And if the lessor accepts the rent that became due after the forfeiture, that means if the lessor accepts the rent, अगर कोई लेसर है वो रेंट एक्सेप्ट कर लेता है आफ्टर द फोरफीचर ड्यू ऑफ द फोरफीचर, जबकि उसको पता है देयर इज द फोरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, जबकि प्रॉपर्टी फोरफीचर का एक ड्यू होता है कि हाँ ठीक है कि अभी प्रॉपर्टी का फोरफीचर हो गया, प्रॉपर्टी इज बीन क्लोज नाउ, अभी ये जो लीज है ये कंटिन्यू नहीं हो रहा है, बट द पर्सन हु इज द लेसी, ओके, वो फिर भी उस जगह पे लीज लेके अपना काम कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कोई चीज के लिए लीज लिया, आई हैव टेकन योर लैंड एज लीज and I started doing my business over there, or I started doing my any cultivation there. Okay, मैंने वहां पे अपना जो काम है वो शुरू कर लिया, right? So I started doing my agriculture things on that specific land after taking the land as the lease. Okay, so what happens after that? That the forfeiture of the property happened. That means the lease has been closed. Take an example that the person is no more entitled to take the lease anymore. Okay, so in that situation, just one second. Okay, so the forfeiture under section 111 clause G that can be cancelled. The first point is if the lessor accepts the rent that became due after the forfeiture. अगर कोई लीज का जो ड्यूरेशन है, जो टाइम पीरियड है, जो ड्यू है, वो ड्यू खत्म हो चुका है, like the person knows that the due has been completed, the due has been ended, but even after the completion of the due, for example, the due was up to the
2 years of the time period, and after the completion of the 2 years the property has been forfeited and the person is no more entitled to get the ownership of the lease, but still that person is occupying that specific land and that person is continuing his business at that specific property at all. And at that situation, if the lessor is accepting the rent from the person who has taken the lease, if the person is accepting accepting the money, the rent from the lessee, then in that situation the forfeiture will be cancelled. फोर्फीचर मीन्स अगर फोर्फीचर किस किस कंडीशन से होता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं. अगर फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग ए प्रॉपर्टी, सो यू आर हैविंग सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस टू हैंडल द प्रॉपर्टी कि हाँ अगर मेरा ये प्रॉपर्टी है, मेरा प्रॉपर्टी कोई लीज पे ले रहा है, सो दैट पर्सन शुड फॉलो सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस दैट हैज बीन एसोसिएटेड. कि अगर मेरा प्रॉपर्टी कोई लीज पे ले रहा है तो उसी को ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मान के चलना पड़ेगा. बट अगर जो लेसी है वो ये कंडीशंस को फॉलो अप नहीं करता है, वो कंडीशंस वायोलेट करता है या ऐसा कुछ गड़बड़ करता है, तो इन दैट सिचुएशन द लीज कैन बी टर्मिनेटेड. लीज उस सिचुएशन में टर्मिनेटेड हो सकता है या फिर द लीज कैन बी फोरफिटेड. ओके, बट अगर मैं किसी को बोल देता हूँ कि यू आर नॉट कैपेबल टू गेट द लीज एनीमोर, आप इस लीज को कंटिन्यू नहीं कर सकते, मान लो मैंने आपको बोल दिया, बट इवन आफ्टर सेइंग दिस I still allowed you to get benefit from the property. मैंने आपको बोला कि you are not entitled to get the lease anymore, but आप वहाँ पे अपना business फिर भी continue कर रहे हो. And the day I told you that you are not entitled to get the lease anymore, or I am forfeiting your lease. After that, what is happening? That I am accepting your money. For example, आप महीने का मुझे 3,000 रुपया पहले से दे रहे हो, मतलब दिस इज ए साइकिल दैट हर महीना आप मुझे 3,000 of the rupees you are paying me in every month. Okay, so this is the deal between you and me, for take an example. But what is happening that when there is a lease or when there is a deal between you and me that you are going to pay me 3,000 rupees per month, but your lease has been forfeited. But after the forfeiture of the lease, in the next month, you are still continuing your business on the same land and you are still giving me 3,000 of the rupees and I am accepting that rent from you. So when I am accepting the rent from you, after the property has been forfeited, I have to accept the lease also. The waiver of the forfeiture will happen if the lessor accepts the rent from the lessee after the forfeiture of the property. Got it? The second condition is the lessor takes any action showing an intention to continue the lease. Agar I am a lessor, the lease has been forfeited, lease close हो गया है, फिर भी I am asking you कि आप एक काम करो, you have misused my property without my permission, so I have suffered the loss that is up to the amount of 5,000 of the rupees due to your mismanagement. So you have to pay me the compensation. आप मुझे क्या करोगे? You have to compensate me for that. कि हाँ मतलब ये जो लीज आपने किया है, आपने जो गड़बड़ किया है, उसी के लिए you have to pay me certain kind of the compensation up to the 5,000 rupees. In that condition only, I am permitting you to continue with the lease. So this is the deal between you and me that even after the forfeiture of the property forfeiture होने के बाद भी मैं आपको दूसरा मौका देना चाहती हूँ. मैं आपको ये बोलती हूँ कि अगर आप ये लीज कंटिन्यू करना चाहते हो, then you have to pay me the compensation and after that I am going to permit you to continue the lease. So in that situation, a forfeiture under the section 111 clause Z can be cancelled if the lessor takes any action showing an intention to continue the lease. यहाँ पे जो लेसर है ना, the lessor is taking an action to continue the lease. As the lessor, I am telling you that I want to continue the lease with you, but with a certain terms and conditions that you have to pay me the compensation of the losses I have beared.
So here this is about the waiver of the forfeiture where the lessor takes any action showing an intention to continue the lease. Okay. This is explained under section 112. Then comes section 130 and this speaks about the waiver of notice to quit. Okay. A notice given under section 111 clause H can be cancelled if the person who gave notice shows their action with or without consent that they wish to continue the lease. Let's see that section 111 clause H, it speaks about what? Okay. Under section 111 clause H, it speaks that the lease ends when the lessor or the lessee gives proper notice to the other as agreed in the lease terms. So, according to clause H of section 111, it is explained that the lease can be ended. Lease खत्म हो सकता है by either by the lessor or by the lessee. यहाँ पे जो लीज है ना वो कोई भी खत्म कर सकता है, वो लेसर चाहे खत्म कर सकता है या फिर अगर लेसी चाहे तो भी वो लीज को खत्म कर सकता है, राइट. एंड इन द कंडीशन दैट the one party must give the proper notice to another as agreed according to the lease terms. For example, there is a terms and conditions, there is a agreement between the parties. There is a mutual understanding between the parties that if you want to end the lease before the specified time, for example, there is the lease, the time period that has been fixed, that is up to the 2 years. Okay. That means for the duration of the 2 years, I am going to get the uh, entitlement of the property, to right to enjoy the property, right? I am not the owner, but for the duration of the two years, there are certain terms and conditions in which I have the right to enjoyment of the property. Okay. Okay. So for the duration of the 2 years, I am going to get the possession of the property. Okay. So when I know that I am going to get the possession of the property for the duration of the 2 years as a lease, as a lessee, I'll enjoy my property in the full on manner, like whatever I could do for to save my property, or how would, if it possible, to enjoy from my side to secure the property, to take care of the property, and to enjoy the property. I did my everything. Okay. If the time period gets completed, for example, there was the duration of 2 years. The 2 years time period is being completed. So when the time period completes, when the time period comes to an end, when the time period terminates, the lease also gets terminated automatically. That means if I am having a lease, if I have taken the lease of a property, the lease will be terminated along with the completion of the time period, that is the 2 years. If the terms and conditions of the lease is that the lease has been done for the duration of the 2 years, then after the completion of the 2 years, the lease have to be ended. The lease has to be ended after the duration. 2 साल के बाद लीज को खत्म करना ही है, because this is the specified time period of the lease and you cannot extend the time that has been primarily fixed. जो टाइम पहले से फिक्स हो रखा है उसी को ही मानना पड़ेगा. आप लीज का टाइमिंग को इधर उधर नहीं कर सकते. दिस इज द प्राइमरी थिंग. द सेकेंडरी थिंग इज कि मान लो देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स विद द लीज. कोई दिक्कत है for which the lease is supposed to be terminated. Lease को terminate करना है. Either the lessor or the lessee wants to terminate the lease. Okay. So when it is proposed on behalf of the lessor or on behalf of the lessee that they want to terminate the lease on their behalf, they have to give the notice on a specified time period. Okay. If the lessor wants that the lessee should leave the property, the lessee should terminate the lease, then it is the
primary responsibility of the lessor. It is the primary duty of the lessor to it is the primary duty of the lessor to give a notice to the lessee before the specified time period. For example, there is a agricultural land of a there is a lease of the agricultural land. So nobody can vacate the land in just 2 to 3 days. If I am giving a notice from in the duration of 15 days, the person who is cultivating in my land, who is doing his agricultural business in my land, is it possible for that person to take away all the crops and run away somewhere? No, it is not possible. That person is doing business in my land. That person has grown the crops on my land. So I have to give him the sufficient time. The crops, the process of the crops has to be completed. The crop has been fully completed. All the process need to be completed fully. After that only I have the right to access the land, because after taking up the lease of the land, that person engaged the land for the specific purpose. So all the benefits aroused from the specific crop, that should be gone to the specific person who is in the possession of the land, and the lessee was in the possession of the land when he grew the crops on the land. So here the lessee is the original owner of the crop, and the lessor has to wait till the crops has been fully grown. And most importantly, let me tell you, when we're talking about the lessee, right? If the lessor wants the lessee has to leave the land, then if it is used for the agricultural purpose, then he has to give the notice from the last 6 months. अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे मेरे एक जमीन है, उसी में मेरा एक लेसी है, वो जमीन पे मेरा अपना जो भी है कल्टीवेशन, अपना एग्रीकल्चरल बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, एंड इफ आई वांट कि वो जो बंदा वो जो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है उधर, दैट पर्सन शुड टर्मिनेट द लीज. फॉर दैट आई हैव टू गिव द नोटिस पीरियड ऑफ द 6 मंथ. मैं उसको 6 महीने का नोटिस भेजूंगी, जहां पे ये मैं मेंशन करूंगी कि दिस इज द ड्यूरेशन ऑफ द 6 मंथ्स. एंड इसी 6 महीने में आपको अपना जो बिजनेस है उसी को क्लोज करना है, उसी को सॉर्ट आउट करना है, या उसी को दूसरे कहीं पे जगह पे शिफ्ट करना है. नाउ आई वांट माय लैंड बैक एंड आई वांट टू एंड दिस लीज. तो अगर जो प्राइमरी कंडीशन के हिसाब से जितना टाइम पहले से फिक्स हो रखा था, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अगर वो टाइम खत्म होने से पहले लेसर चाहता है कि लेसी अपना जमीन को छोड़ दे, इफ इट इज यूज्ड फॉर द एग्रीकल्चरल पर्पज, देन द लेसर हैज टू गिव द नोटिस पीरियड ऑफ द 6 मंथ. 6 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा. दूसरा क्या है, अगर आप किसी को अपना घर भाड़े पे दिए हो एंड यू वांट दैट पर्सन टू बैक इन द हाउस, तो 15 दिन रहते हुए आई सेंड द पर्सन ए लीगल नोटिस एंड आई से कि 15 दिन पे आप मेरा घर खाली कर दो, एंड 15 days इज ए सफिशिएंट टाइम टू फाइंड आउट द अनदर होम एंड टू शिफ्ट. तो यहाँ पे अगर मेरे को उस इंसान को मेरे घर से निकालना है, देन आई हैव टू सेंड हिम द लीगल नोटिस, दैट इज अप टू द ड्यूरेशन ऑफ द 15 days नोटिस. 15 दिन का नोटिस मैं उसको भेजूंगी ही, राइट? So this is explained under section clause H, that when there is the proper notice by the lessor or by the lessee, even in the condition अगर lessee चाहता है कि मैं अपना जो लीज लिया हूँ जो प्रॉपर्टी का, आई वांट टू टर्मिनेट द लीज, मैं ये लीज को कंटिन्यू करना नहीं चाहता हूँ. So in that specific condition also, if the lessee wants, he is also capable to terminate the lease, but that too with a certain condition, that he has to give a notice period of a specific time. Okay, so this is explained under clause H, and under
section 113, it is told that a notice given under section 111 clause H can be cancelled if the person who gave the notice shows their actions with or without consent that they wish to continue the lease. Okay, what does it mean? It means the under section 111 clause H, whatever we have understood, it can be cancelled if the person who gave the notice shows their actions with or without consent that they wish to continue the lease. अगर मैंने as a lessor I have sent you a notice that I do not want to do this business anymore. Okay. So here, when the lease ends, so here when the according to section 111 clause H, when it comes about the waiver of the notice to quit, and in that specific situation, it will be observed that whether the lessor or lessee is putting any action, putting any kind of the activity to continue with the lease, यहाँ पे जो लेसर है या ये जो लेसी है, क्या वो लीज को कंटिन्यू करने के लिए विथ द इंटेंशन और विदाउट द कंसेंट, कंसेंट हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, बट इज दैट पर्सन इज स्पेसिफिकली शोइंग देयर इंटरेस्ट, उनका इच्छा टू कंटिन्यू द लीज. Okay. So, if it is yes, if it is observed that the person who has sent the notice to quit the lease, it might be the lessor or might be the lessee. So, in that specific circumstances, the person who has sent the notice to quit the lease, that person has to show their interest in their actions, by their actions, with or without consent, that they wish, they want, they are interested to continue the lease. Okay. Then comes section 114. It speaks about the relief against forfeiture for non-payment of the rent. Okay. It means if the lease ends due to non-payment of rent and the lessor sues the lessee, the court can allow the lessee to continue the lease if the lessee pays or promise to pay the rent, interest, legal cost within 15 days of the hearing. So it means when we are talking about the forfeiture or non-payment of the rent, okay? If the lease ends due to the non-payment of the rent, अगर rent पे ना करने के वजह से lease end हो गया, for example, I have taken a lease which is up to I have to pay 30 lakh per annum as the like annual rent of the lease, but as just because I didn't pay my rent, then the rent is terminated. Okay. So here, if the lease ends due to non-payment of the rent, अगर पेमेंट का नॉन पेमेंट के वजह से, रेंट का नॉन पेमेंट के वजह से लीज एंड हो जाता है, एंड यहाँ पे अगर लेसर जो है वो लेसी को स्यू करता है, उस केस पे मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आई यूज टू पे यू 30 lakh पर मंथ as the payment of the rent, but I could not pay you the rent in a specific month, due to which it was the primary condition कि अगर मैं पे नहीं कर पाया किसी मंथ से तो उसी मंथ पे लीज एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा. But in that specific case, what you did, you went to the court of law, अपने कोर्ट में जाके ये बोला कि मैम जो है वो मेरे से मतलब मेरे को रेंट पे करना था 30 lakh of the rupees and she is not paying me the amount. Okay. So here there are two choices. Okay. First is
The lessee pays or promises to pay the rent, interest और legal cost within 15 days of the hearing. कोर्ट क्या करेगा, यहाँ पे बोलेगा कि लीज हम टर्मिनेट नहीं करते हैं, आपको हम ना 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, आप क्या करो, ये जो पेमेंट है, जो पेमेंट आपको करना है वो आप 15 दिन के अंदर करो, या फिर आप ये कमिटमेंट करो कि आप 15 दिन के अंदर ये पैसा वापस कर दोगे. 15 डेज ऑफ द हियरिंग, ये जब कोर्ट का ये जब कार्रवाई हुई उसी के अगले 15 दिन के बाद हम दूसरा कार्रवाई करेंगे, तब तक आप इसका अगर पेमेंट कर देते हो, ये रेंट पेमेंट हो जाता है, then the lease will be continued. The second condition is, if this happens, the lease continues as if no forfeiture occurred. आपने उस तरीके से लीज को कंटिन्यू करो जैसे कि कोई फॉरफीचर हुआ ही नहीं है. Like the lease will be continue like nothing happened. The forfeiture of the property, the forfeiture of the lease has been happened. ये जो लीज है ना, लीज का जो प्रॉपर्टी है उसी को बंद कर दिया गया था. The property has been forfeited. But even after that, the lessee continue if no forfeiture occurred. Okay, that means if this happens, the lease would continue, but if no forfeiture occurred, then in that way the lease will be continued. Like यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि पहला कंडीशन ये है कि लेसी जो है वो क्या करेगा, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, लीगल कॉस्ट हो गया ऑफ द हियरिंग, आइदर वो खुद पे कर देगा और द लेसी विल प्रॉमिस टू पे इन बिटवीन द 15 डेज ऑफ द हियरिंग. जब तक हियरिंग हुआ, हियरिंग का 15 दिन के बीच में वो प्रॉमिस करेगा कि ठीक है, आई विल पे फॉर दिस. इन द सेकेंड सिचुएशन उसमें वो क्या करेगा, द लीज विल कंटिन्यू एज इफ नो फॉरफीचर अकर्ड. लीज इस तरह से कंटिन्यू होगा जैसे कि कोई फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी हुआ ही नहीं है. दिस इज एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 114. Then comes your 114A, 115, 116 and 117. So when we're talking about the 114A, it speaks that if the lease is terminated for any reason other than the non-payment of the rent, रेंट का नॉन पेमेंट के वजह से लीज टर्मिनेट हो जाता है, एंड इन दैट सिचुएशन कोर्ट क्या करता है, लेसी को जो है एक मौका देता है 15 दिन के अंदर रेंट का रिपेमेंट करने का. ये हमने डिस्कस किया. दूसरा सिचुएशन है, अगर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट को छोड़ के दूसरा कोई भी रीजन के वजह से ये जो लीज है टर्मिनेट हो जाता है, देन लेसर क्या करेगा, give a written notice to the lessee specifying the breach, allow the lessee time to correct the breach if it can be corrected. Okay, that means the पहला कंडीशन क्या है, give a written notice to the lessee specifying the breach. Okay, so that means यहाँ पे लेसी अगर लीज टर्मिनेट हो जाता है ड्यू टू द नॉन पेमेंट ऑफ द रेंट, ड्यू टू अदर देन एनी रीजन एक्सेप्ट द नॉन पेमेंट ऑफ द रेंट, सो यहाँ पे लेसर हैज द राइट टू सेंड ए नोटिस टू द लेसी स्पेसिफाइंग द ब्रीच. अगर वो टर्मिनेट करना चाहता है तो कर सकता है, बट अगर वो चाहते हैं कि नहीं यार अभी जो ये लीज है उसी को टर्मिनेट नहीं करते, तो वो क्या कर सकता है, ही कैन सेंड ए नोटिस टू द लेसी स्पेसिफाइंग द ब्रीच. वो स्पेसिफिक कौन सा चीज का ब्रीच हुआ है, कौन सा टर्म्स एंड कंडीशंस का ब्रीच हुआ है, उस चीज को हाईलाइट करके लेसर क्या है, लेसी को लीगल नोटिस भेज सकता है. पहला चीज. दूसरा, अलाउ द लेसी टाइम टू करेक्ट द ब्रीच इफ इट कैन बी करेक्टेड. वो क्या करेगा ना, लेसी को ना थोड़ा सा टाइम देगा. ओके, पहला हमने जो पढ़ा था सेक्शन 114 पे, वो उसी को 15 दिन का कोर्ट टाइम देगा हियरिंग के दौरान कि 15 दिन के अंदर आप ये रेंट पे करो, या अभी प्रॉमिस करो कि 15 दिन के अंदर आप पे करोगे. एंड अगर ये हो जाता है, अगर ये रेंट पेमेंट हो जाता है, then even after the forfeiture occurred, even after the property has been terminated, the lease has been terminated, it will be continued as nothing happened. ऐसा चलेगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था. दूसरा सिचुएशन अंडर सेक्शन 114A हमने पढ़ा कि अगर ये
नॉन पेमेंट ऑफ द रेंट को छोड़ के दूसरा कोई रीजन है तो लेसी क्या करे, लेसर हैज द राइट टू टर्मिनेट द लीज। या फिर अगर वो टर्मिनेट करना नहीं चाहता है, वो क्या करेगा, लेसी को एक नोटिस भेजेगा, लीगल नोटिस, जहाँ पे वो स्पेसिफाई करेगा द रीजन फॉर व्हाट ही वांट्स टू टर्मिनेट द लीज। और जिसको रेक्टिफाई कर, अगर उस सिचुएशन को, अगर उस ब्रीच को रेक्टिफाई किया जा सकता है, देन द लेसर विल अलाउ द लेसी टू करेक्ट द ब्रीच। वो लेसी को क्या करेगा, बोलेगा कि तुम ये जो ब्रीच है उसी को रेक्टिफाई करो, उसी को करेक्ट करो, if it can be corrected. Okay, so here next comes, if the lessee fails to correct the breach in a reasonable time, the lease ends. Okay, अगर ये जो लेसी है और रीजनेबल टाइम के अंडर ये जो ब्रीच है उसी को रेक्टिफाई कर नहीं सकता, तो ये जो लीज है वहीं पे टर्मिनेट हो सकता है, राइट। ओके, देन आता है सेक्शन 115, इफेक्ट ऑफ सरेंडर एंड फोरफीचर ऑन द अंडर लेसी लीजेस। अंडर लेसी क्या होता है, सबलेसीज, सबलीजेस मतलब मैंने आपसे लीज लिया, मैंने बाकी दो लोगों को वो लैंड सबलीज पे दे दिया, उसी को बोलते हैं सबलीज। मतलब मैंने आपसे लिया, मैं वही जमीन को, जो मेरा लीज किया हुआ जमीन है, उसी को बाकी दो लोगों को भी लीज पे दे दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे जमीन जो लिया है वो 5 साल के लिए लीज पे लिया है, तो 1 साल मैंने उसको एंजॉय किया, बाकी मैं दो लोगों को वही जमीन लीज पे दे दिया, जिसी को बोलते हैं सब लीज, फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द 4 years, सो दैट मेरा लीज खत्म होने के साथ साथ आप दोनों का भी लीज खत्म हो जाएगा। लाइक द सबलीजर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मी। वो जमीन का जितना भी पैसा है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को ओनर जो है, लेसर जो है, उसी को महीने का 10,000 रुपया पेमेंट करना है, एंड मैंने क्या किया, मेरा जो दो लोग हैं उनको महीने का 6,000 रुपये में ये लैंड जो है दे दिया, सो दे विल एंजॉय द लैंड। मेरे हाथ में कितना आएगा, 12,000 उन दोनों से। तो मैं अपना जो, मतलब द पर्सन हु इज माई लेसर, मैं उसको कितना दूंगी, मैं उसको आई पे द लेसर द अमाउंट ऑफ 10,000, फायदा मेरे को हुआ। तो जमीन में आपसे लीज ले रही हूँ, बट लीज किया हुआ जमीन को मैं फिर से और किसी को लीज पे दे रही हूँ, उसी को बोलते हैं सब लीज। तो अगर एक प्रॉपर्टी जो सबलीज है, अगर प्रॉपर्टी को कोई सरेंडर कर देता है, अगर कोई लीज सरेंडर कर देता है, देन उस सिचुएशन पे क्या होता है, इन दैट सिचुएशन any under leases are not affected unless the surrender is done to get a new lease. Okay, that means अगर ये जो सरेंडर है, अगर ये सरेंडर करके फिर से रिन्यू हो रहा है लीज, तो वो बात सही है। अगर ऐसे ही, फॉर एग्जाम्पल द लेसी इज फेसिंग एनी सिचुएशन एंड दैट इज वाई द लेसी इज टर्मिनेटिंग द, मतलब बिफोर द टाइम पीरियड द लेसी इज सरेंडरिंग द लीज, ये बोल रहा है कि नहीं, आई एम द लेसर, आई एम नॉट द लेसी एनीमोर। So here in that situation, the person who are the sub lazy, वो जिन लोगों को दिया है एज द लीज, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेसर डायरेक्टली। ओरिजिनल जो लेसर है ना, उनके लिए दे विल बी, द सबलेसेस विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेसर डायरेक्टली, नॉट टू द लेसी। ये हो गया पहला चीज। दूसरा आया ऑन फोरफीचर। अगर द ओरिजिनल लीज इज फोरफिटेड, टर्मिनेटेड, ऑल द अंडर लीजेस आर ऑल्सो कैंसल्ड। ओके, अगर एक जो लीज है, अगर वो उसका जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाता है, या फिर द लीज इज टर्मिनेटेड, तो उसी के साथ साथ उसी का जितना सारा सब लीज था, फॉर एग्जाम्पल लीज 5 साल के लिए था, तो 5 साल खत्म हो गया, लीज फोरफिट हो गया, टर्मिनेट हो गया, तो फिर उसी के साथ साथ सारा सब लीज भी उसी वहीं पे खत्म हो जाएगा। बट यहाँ पे तो एक्सेप्शन है, अगर लेसर जो है फ्रॉडुलेंटली कॉजेस फोरफीचर टू हार्म द अंडर लीजेस एंड द कोर्ट प्रोवाइड्स रिलीफ अंडर सेक्शन 114। ओके, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अगर लेसर जो है फ्रॉडुलेंटली कॉजेस हार्म टू द अंडर लेसिस, अंडर लेसी को लेसर जो है वो अंडर लेसी जो है, अंडर द लेसी, उनको हार्म करने के लिए अगर लेसर जानबूझ के फ्रॉडुलेंटली ये टर्मिनेशन कर रहा है,
then in that situation this will not be applicable. But अगर ये genuine है, then forfeiture will be terminated, all the under leases will be terminated. Then comes your next section, section 116. It speaks about the effect of the holding over. It means if a lessee or sub-lessee continues to stay on the property after the lease ends, and the lessor accepts the rent or agrees to continue the possession, then the lease is automatically renewed as year to year or month to month lease depending on the property's use. Okay. For example, सिंपल सी बात है, आप और मेरे बीच में ये डील हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी है इसी को यूज किया जाएगा फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द 2 years. 2 साल खत्म हो गया. 2 साल के बाद भी still I started enjoying the property for the duration of 3 months. And I also used to pay you the rent and you kept accepting the rent. So here the lease will be called as renewed because यहाँ पे time period खत्म होने के बाद भी मैंने property का enjoyment किया and as the lessor you accepted the rent from me. So here the lease will, even if it is terminated, it is impliedly renewed. इसको ये माना जाएगा कि impliedly ये जो lease है ये renew हो गया है, right? And the last section, that is section 117, it speaks about the exemption of leases for agricultural purposes. It speaks that the leases for the agricultural purposes are not governed by the above rules unless the state government issues notification to apply these rules to the agricultural leases. This notification will take effect 6 months after the publication. If the original lease is surrendered by the any under lessees or sublessees are not affected unless the surrender is done. Or if the original lease is forfeited, the under lease is also cancelled when the lessor fraudulently causes the forfeiture to harm the other leases. Okay. So under section 117, as we discussed, if the land is a agricultural land, तो उसी situation पे you have to, there is the specific agricultural lease and वहां पे जो होगे ना, if the lease has to be terminated by the lessor, there must be the 6-month notice by the lessor. And if the agricultural land is given by the government, then in that case the government has to give the 6th-month notice. गवर्नमेंट को 6 महीने का नोटिस पीरियड इशू करना होगा या तो गवर्नमेंट हैज टू पब्लिश द नोटिफिकेशन बिफोर द 6 month. ओके, नोटिफिकेशन का 6 महीने के बाद ही लीज टर्मिनेट हो सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. दैट मीन्स ये गवर्नमेंट हो या फिर कोई स्पेसिफिक लेसर हो, 6 महीने का नोटिफिकेशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट को और 6 महीने का नोटिस देना पड़ेगा लेसर को. 6 महीने से पहले आप नहीं कर सकते, 6 महीने से पहले बताना पड़ेगा अगर आप कोई एग्रीकल्चरल लीज कर रहे हो तो. दूसरा सिचुएशन इन एग्रीकल्चरल लीज, अगर आप टाइम से पहले सरेंडर कर रही हो लीज को, देन इन दैट सिचुएशन पहला बात हमने डिस्कस किया जैसे कि अंडर सेक्शन 114, अगर ये फ्रेश दूसरा लीज साइन हो रहा है तो बात अलग है क्योंकि वो तो कंटिन्यू रहेगा. एंड इफ देयर आर सबलेसी, वहां पे सबलेसिस है एंड वहां पे अगर लीज सरेंडर हो रहा है, देन द सबलेसी विल बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द लेसर. एंड सेकेंडली, अगर लीज टर्मिनेट हो रहा है, unless and until लेसर जानबूझ के फ्रॉडुलेंटली ये लीज टर्मिनेट नहीं कर रहा है इन द एग्रीकल्चरल लैंड, देन द लीज विल बी टर्मिनेटेड. अगर ये जानबूझ के कर रहा है फ्रॉडुलेंटली तो वो लीज टर्मिनेट नहीं होगा. अगर जानबूझ के नहीं कर रहे, एक्चुअली लीज का टाइम पीरियड खत्म हो गया है, फॉर एग्जाम्पल द एग्रीकल्चरल लैंड हैज बीन गिवन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द 2 years, 2 साल खत्म हो गया, then all the sublease and the lease has to be terminated. So this is explained under section 117 and I think with this we completed the whole concept of the lease, and here also we have completed the portion of the transfer of the property act. We'll start some new provision in the next class. This is all for today. Thank you. Bye bye. Take care.